Hello there everyone. Welcome back to the Third Man Ticket Show with me अभिनव और मेरे साथ मेरा जोड़ीदार हर्षल गालिया. हर्षल, good win. थोड़ा Yeah, this format T20 format is one जहाँ पे we have a few players जो कि अलग ही form में आते हैं. One of them being our captain today. But before getting into all of that about the game थोड़ा क्या लगा तेरे को? थोड़ा डिफिकल्ट बना लिया हमने एंड में, थोड़ा मतलब काफी डिफिकल्ट यार. yeah. अक्षर पटेल मेड श्योर दैट कि ये गेम लास्ट बॉल तक जाए. ही वांटेड दिस टू बी अ लास्ट बॉल थ्रिलर बिकॉज लास्ट 2 महीने से हम लोग को एक लास्ट बॉल थ्रिलर नहीं मिला है. आज हम लोग को मिला लास्ट बॉल थ्रिलर. बट या इट वाज अ गुड गुड बैटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया. वी ऑल न्यू दैट ये ऐसे ऐसे पिच पे ऐसे ग्राउंड पे जहाँ ड्यू इतना सारा आता है और बैटिंग के लिए फ्लैट पिच है, तो इस पे तो आपको 200 प्लस बनाने ही चाहिए. एंड द वे सूर्य कुमार बैट्स इन दिस फॉर्मेट, लास्ट लाइव में भी मैंने बोला था कि सूर्य कुमार यादव इज आर टेलिस्मैन इन T20 फॉर्मेट, कि उसके अराउंड अगर हम लोग टीम बनाएंगे देन बोलते ना हम लोग हमेशा से वी वुड हैव अ गुड टीम एंड वी कैन चैलेंज फॉर द T20 वर्ल्ड कप. एंड टुडे ही शोड हिज क्लास मैन. जैसे वो फ्लॉलेसली इनिंग्स खेलता है, जैसे फ्लॉलेसली शॉट्स खेलता है, वो बहुत ही मेजमराइजिंग है. एंड रिंकू सिंह का फिनिशिंग, यही एक चीज था जो इंडिया बहुत टाइम से मिस कर रहा था. भले T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो, एक फिनिशर का रोल अदा करने वाला प्लेयर हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे. बट जब से रिंकू सिंह का वो सीजन गया है वो आईपीएल के लिए, उसके बाद से रिंकू सिंह हैज बीन मैग्निफिसेंट फॉर केकेआर एंड फॉर इंडिया ऑल्सो. हमने देखा उनको एशियन गेम्स में भी खेलते हुए, और अभी आज भी अगर उन्होंने देखा जाए तो कमाल का फिनिश किया. एंड यही है रिंकू सिंह, रिंकू द किंग. यस, आई थिंक अगर एक दो वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना हो ये चेस को, इट वाज अ प्रीटी प्रोफेशनल चेस बाय द बैटर्स. एंड में आई थिंक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द लाइक्स ऑफ रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह. एंड डिसअपॉइंटेड विद द वे कि अर्शदीप सिंह का रन कंप्लीट नहीं हुआ बट रिंकू सिंह का रन कंप्लीट हो गया था वो बॉल पे. सो आई थिंक वो थोड़ा शॉकिंग है. बट एनीवेज, कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉलिंग, आई थिंक ग्राउंड काफी छोटा है. यू हैव टू गिव द फैक्ट दैट 190 200 तो बनने ही वाले ये पिच पे. एंड टू बी ऑनेस्ट ड्यू थी नहीं यार पूरे मैच में. एंड उसके बाद चेजिंग दिस काइंड ऑफ टोटल विद दैट इज, आई थिंक ये भी देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप इज नॉट द सेम एज द वन विद द वर्ल्ड कप, बट आई थिंक द बैटर्स डिड डू द जॉब. या द बॉलिंग इफ यू आस्क मी, मैं एक ही चीज से थोड़ा शॉक था कि हम लोग सिर्फ 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं विद द T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन दैट्स Do you गोइंग think, ऑन राइट नाउ. एंड sorry, आपको काट रहा हूँ. Do you think this is what we are looking at? Because five bowler theory World Cup में बहुत काम आई हमारे लिए. I mean, it wasn't planned. It was pretty unfortunate that Hardik Pandya was ruled out. But do you think this is how we would be moving forward? Because ये team में there is Tilak Verma who can bowl. There is Yashasvi Jaiswal. I think I've seen him bowl as well a bit. या Uh, other than that, I don't see रिंकू सिंह को मैंने ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं देखी है. आई थिंक एक दो बार देखा है बीच में आईपीएल में. But other than that, we are pretty much going with five bowlers. But this inexperienced bowling lineup, do you think it is worth the gamble कि 5 bowlers के साथ जाए? Because this is a make or break situation. Because आज हमने देख लिया with the likes of Prasidh Krishna, getting hit for the cleaners. Ravi Bishnoi as well, start अच्छी थी but then इनमें बहुत runs खाए. Do you think with this team especially you need a sixth bowler in Hardik Pandya? Yeah, see, in ODS, you can take a chance to go with the 5 bowling option because you know that the 5 bowlers you are going to play are the quality bowlers and you get the 10 overs to set up a batter. और अगर आपके एक दो ओवर खराब जाते भी है then you can come back because you have 8 overs after that. But ये T20 you hardly get a chance to come back as a bowler. अगर हम लोग देखें तो आज प्रसिद्ध कृष्णा का ही पहला या दूसरा ओवर उनका बहुत ही खराब गया था. 16 रन दे दिए थे उन्होंने वो ओवर में, उसका कभी वो वापस आए ही नहीं गेम में. सेम गोज विद रवि बिश्नोई. रवि बिश्नोई ने आज अच्छी बॉलिंग की बट या तो फिर भी उन्होंने मार खाया बहुत ज्यादा. सो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आपको बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए. एंड विदाउट हार्दिक पांड्या वी हैव स्ट्रगल टू फाइंड दैट बॉलिंग ऑप्शंस. वी हैव स्ट्रगल टू फाइंड दैट 11 which combines a good batting lineup and good bowling lineup also. So मेरे हिसाब से तो आज के गेम में we could have given chance to यशस्वी और तिलक वर्मा टू बोल. हाँ वो लोग भी मार खाते हैं, ऐसा नहीं कि they would have gone for 5 or 6 runs in an over. They could have got hit for 20 runs and over. बट यही है कि आपको इनको चांस देना ही पड़ेगा, आपको एक बॉलर बनाना पड़ेगा बैटर से. एंड आई थिंक दीज टू आर यशस्वी जायसवाल एंड तिलक वर्मा. ये दोनों बॉलिंग करते आ रहे. यशस्वी जायसवाल ने तो अपने जितना भी यूथ क्रिकेट खेला है उन्होंने एज ऑलराउंडर ही खेला है. वो हमेशा
अपना आर्म रोल करते हैं. ही हैज वन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ गोल्डन आर्म. जब भी वो आते थे वो विकेट लेके देते थे अंडर 19 में. तो मेरे हिसाब से दे शुड गिव चांस टू देम बिकॉज इन दिस फॉर्मेट टू गो विद 5 bowlers इज वेरी रिस्क. इवन इफ योर ऑल 5 bowlers आर वर्ल्ड क्लास लाइक शमी, सिराज, बुमराह, अगर आप इनके साथ भी जाते हो, जडेजा, कुलदीप, बट फिर भी एक दिन ना किसी का दिन खराब जाएगा और वो फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है. 50-60 रन का अगर आपका एक स्पेल चला गया तो वहां पे आपका गेम आपके हाथ से निकल जाता है. ट्रू. और हर्षल एक स्टैट अभी देख रहा है, दिस इज आवर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन T20 आई हिस्ट्री. आई मीन गिवन द या फैक्ट दैट हम जितना T20 क्रिकेट खेलते हैं साल भर में, या हमने जितना खेला है, आई थिंक इट्स अ प्रीटी प्रीटी गुड रिकॉर्ड टू हैव, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड द लास्ट highest chase was back in 2009 against Sri Lanka when we chased down 207 in Mohali. So I think this is a good stat to have, to be very if I honest. But remember, if I remember how many did we chase in the first T20 against West Indies, वो कैसरिक विलियम्स वाला I think सीन, close वो to भी 200. टू I think टू close ओ to 200. सेवन के अराउंड ही Mostly, था. 206 या 207 के अराउंड ही था वो. बट दैट yeah. वाज आल्सो दैट वाज द लास्ट टाइम वी हैव चेस्ड 200 सक्सेसफुली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो या 200 चेस करना कोई भी पिच पे डिफिकल्ट होता है. बट द वे T20 इज गोइंग ऑन, 200 इज नथिंग बट जैसा 10 रन ओवर और 10 रन ओवर अभी कुछ भी नहीं लगता T20 के बैटर्स को. अगर आज के आप देखें तो अगर आप आज ईशान किशन की पर्टिकुलरली इनिंग्स देखो, उन्होंने आते ही एक मेडन ओवर खेल लिया, लेकिन जब वो वापस जा रहे हैं तब वो अपने 140 के स्ट्राइक रेट से जा रहे हैं. तो यू कैन नो दैट इन दिस फॉर्मेट देयर आर प्लेयर्स हु कैन कवर अप वेरी क्विकली एंड ईशान किशन इज वन ऑफ दैट बैटर हु कैन कवर अप क्विकली. एंड हमने वही देखा आज द वे एवरीवन बैटेड. दे हैड वन थिंग इन द माइंड कि हम लोग को मारना है, हम लोग को अटैकिंग इनिंग्स खेलनी है. वी डोंट वांट दैट इन लास्ट 3-4 overs वी नीड 50-40 runs. वी वांट टू फिनिश दैट गेम बिफोर दैट. और आज सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने ऐसी बैटिंग की थी कि ये गेम 19 ओवर से पहले हो जाना चाहिए था अगर अगर ये टिक जाते सूर्य कुमार यादव. बट या ऑफकोर्स थोड़ा तो प्रॉब्लम आना ही था बिकॉज T20 फॉर्मेट में एक दो डॉट बॉल्स एंड प्रेशर आपके ऊपर वापस आ जाता है. या आई थिंक वेल सेड देयर. एंड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, आई थिंक जॉस इंग्लिश ब्रिलियंट इनिंग्स, क्योंकि स्टीव स्मिथ वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. आई थिंक इतनी क्लीन हिटिंग मैंने जॉश इंग्लिश के बैट से बहुत टाइम के बाद देखी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जॉस इंग्लिश इन वेस्टर्न, फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग ऑन विकेट्स लाइक पर्थ, जहाँ पे वो बहुत फटाफट रन्स बनाते हैं, प्लेइंग फॉर पर्थ स्कॉचेस इन द BBL एज वेल. बट आई थिंक दिस इज Yeah. प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई सॉ जॉश इंग्लिश प्ले हाउ ही कैन प्ले. क्योंकि अब तक जब भी जॉस इंग्लिश को देखा है मैंने, आई थिंक ही इज आई थिंक फर्स्ट 100, लाइक 50 स्कोर भी नहीं था इसके पहले इन T20 क्रिकेट फॉर हिम. सो आई थिंक ओवरऑल जॉस इंग्लिश हैज द कैपेसिटी, हैज द कैपेबिलिटी टू प्ले लाइक दिस, बट वो यूज नहीं करा उनने. काफी टाइम तक मैंने देखा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द BBL एंड फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. सो आई थिंक दैट्स one of the best innings I've seen in T20 cricket in recent past, 47 ball 100. या द बेस्ट थिंग अबाउट हिज इनिंग्स वाज द वे वो लेंथ को पहचान लेता है यार. मतलब इट्स ए टिपिकल ऑस्ट्रेलियन थिंग कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जब भी देखो तो कोई भी बैटर रहेगा वो लेंथ को बहुत अच्छे से परख लेता है. अगर आप डेविड वार्नर की बात कर लीजिए, आप मैथ्यू हेडन की बात कर लीजिए जब वो उनके जमाने में थे, तो जो लेंथ पिक करना रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एज अ बैटर. और जो वो पिक कर रहा था सही टाइम पे पिक कर रहा था, उसे पता था कहाँ पे शॉट खेलना है. ही न्यू बिफोर द बॉल वॉज बोल्ड कि अगर यहाँ पे बॉल हुआ है तो मैं यहाँ पे शॉट खेलने वाला हूँ. तो टू माइंडेड नहीं हो रहा था वो, तो कमाल की इनिंग्स खेली. बट यही था कि स्टीव स्मिथ की इनिंग्स थोड़ी बहुत उन्हें बातें यहाँ पे हिंडर करेगी बिकॉज अगर स्टीव स्मिथ थोड़ा अग्रेसिवली खेलते तो शायद से 220-230 का स्कोर होता. एंड द लास्ट ओवर बोल्ड बाय मुकेश कुमार, मैन, अमेजिंग ओवर, गिविंग जस्ट 5 runs, bowling one no ball also in that. So you can see that the way he bowled was last over तो एकदम मस्त से डाला था. मैन, I'm very impressed with Mukesh Kumar the way he held his composure in the last over. True. And again, if you talk about the entire Australian innings, I think जॉस इंग्लिश को ये भी हेल्प करा कि वी हैड अ बिट इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप. या यहाँ पे बुमराह होते, शामी होते, देन मे बी यू वुडंट हैव सीन हिम प्ले इन द सेम वे. सो आई थिंक ओवरऑल गिवन द फैक्ट दैट हम, आई एम ओनली सेइंग इनएक्सपीरियंस ओनली बिकॉज बहुत सारा क्रिकेट साथ में नहीं खेला. आई थिंक वन थिंग इज नोटिसिंग द फैक्ट कि IPL क्रिकेट खेलते हैं सारे बॉलर्स, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट टू व्हाट यू सी इन द IPL. आई मीन अर्शदीप सिंह फॉर इंडिया एंड अर्शदीप सिंह फॉर किसके लिए खेलते हैं, पंजाब. आई थिंक दैट्स डिफरेंट. Bishnoi same as well. Mukesh Kumar looks different as well. Prasidh Krishna looks really good in IPL, and today we saw him struggle as well. So I think overall, धीरे धीरे जब ये, because हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि we were only playing close to 12 or 13 T20Is before the next World Cup. 11.
11 whatever. So I think that is a big thing to remember, because not just India, I think a lot of teams, I think even Matthew Wade said it at the toss that they are not playing many games before the next T20 World Cup. So I think if you have to get it right, it is in these 11 odd games. Yeah, see, IPL makes a huge issue for Yeah. team to prepare for a T20 वर्ल्ड कप बिकॉज आईपीएल जैसे खत्म होता है उसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप चालू हो रहा है. सो आपको टाइम नहीं मिलता है अगर आप अभी देखो तो नवंबर में आपका वर्ल्ड कप खत्म हुआ है. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ आपको मिलते हैं टू प्ले योर इंटरनेशनल क्रिकेट. मार्च एंड से आपका आईपीएल चालू हो जाएगा जो मई तक चलेगा एंड देन फिर जून में आपका T20 वर्ल्ड कप है. तो इसलिए अगर आप देखो तो इंडिया का भी स्केड्यूल इसीलिए ये 5 T20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. अगर ये 5 T20 नहीं है तो हम लोग के पास सिर्फ 6 T20 आइज रहते बिफोर द वर्ल्ड कप. सो दिस 5 T20s आर गुड इनफ फॉर द न्यू मैनेजमेंट. अगर आप ये भी देखो तो वीवीएस लक्ष्मण ने इसका जो ग्रुप है वो भी अभी धीरे धीरे आएगा. उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी T20 वर्ल्ड कप की और उनको अपनी टीम बनानी पड़ेगी. तो इसी पे मेरा आपसे क्वेश्चन है. जो इतने सारे रूमर्स आ रहे थे अभी बहुत ज्यादा कि बीसीसीआई ऑफिशियल के Yeah. सूत्रों से पता चला है कि रोहित शर्मा माइट नॉट प्ले T20 अगेन. एंड शायद से उसमें आप अगर विराट कोहली का भी नाम जोड़ दो तो किसी को इतना ज्यादा हैरानी भी नहीं होगी बिकॉज ये दोनों को निग्लेक्ट करने का बहुत पहले से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि दे बोथ माइट नॉट प्ले T20 अगेन. डू यू थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन द वे रोहित शर्मा हैज प्लेड इन द ओडीआई वर्ल्ड कप? आई नो दैट द फॉर्मेट इज डिफरेंट बट द अप्रोच रोहित शर्मा shown. Do you think it's a wise decision to not select Rohit Sharma, or maybe Rohit Sharma's call that he doesn't want to play T20 cricket? What are your thoughts on that? I don't know, man. I think that's a really tough question right now. I think could be a bit reactionary as well, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर आ रहे हैं अभी. यही शायद हम जीते होते वर्ल्ड कप फाइनल तो शायद हमें वी वुड हैव डिफरेंट ओपिनियंस फॉर पीपल हु आर सेइंग दे नहीं खेलना चाहिए. आई मीन, गिवन द फैक्ट दैट रोहित हैज लेड द टीम सो वेल, and given the fact that he does so well for Mumbai Indians as well, because IPL के just बाद ही, I think if I'm not wrong, we are playing the World Cup this time around. Yeah, So depends a lot on how these guys do in the IPL as well. मैं ये नहीं कहूँगा कि यार no, Rohit Sharma definitely needs to be axed from the T20 side. Yeah, Virat Kohli needs to be axed from T20 side. I would not mind Virat Kohli opening the batting in T20 as well alongside Rohit Sharma. I think if that is our best opening pair, just go with it. I think right now, only because you know ये फाइनल हुआ है, वी हैव लॉस्ट द गेम. रोहित शर्मा बैटेड रियली वेल इन द पावर प्ले, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ही वाज प्लेइंग एज अ 50 ओवर गेम एज वेल. He wasn't playing as a T20 game, as an opener at that point. So I 10 over think, power play. yeah, I mean, given the fact that 10 overs power play, everything, I think that was a strategy we worked out for him, and may not work out in the IPL if he tries to do the same with 6 overs. So I think ifs and buts ka game hai right now, but right now I am just happy that we have good backup openers as well. Agar in log ko, if the BCCI decides to take a different way, different route with the senior players, and overall, I think it will come down to the decision by Rohit and Virat himself. I think the board won't, do such a thing again. Ki yaar, nahi, we do not need both of you guys right now. I think there is better transparency, better communication right now between the players and the board is what I feel. And वो decision आएगा in the end ki the captain is telling, the Rohit himself is saying that maybe it is time for me to step away from at least one of the format and starting with the T20 is what I feel. Because mere hisab se, I think the Champions Trophy and the 2027 World Cup right now has to be the aim. I don't see the T20 World Cup as a big thing right now, because हम हर दूसरे साल हम T20 World Cup खेलते हैं. I think you won't even remember after one point कि कौन पिछला T20 World Cup जीता था, but you sure do about the 50 over and the Champions Trophy. So I think right now the focus will be towards the T20 World Cup, but other decisions like you mentioned, Rohit ka hona, Virat ka hona, I think that will be in the discussion as well. Yeah. What So do you one think? more What do you cause like? of Should concern. these guys be a part of it? See, I have said this before in the previous live also that ki Rohit Sharma and Virat Kohli, the quality of batters they are, it's very hard for me to think that we will go into a World Cup without them. Yeah. See, you may say that कि यार ये पुराने चावल हो गए, let's go with some youngsters and all. But these are the two of the best white ball cricketers India has produced in the last 20 years, if you ask me. So it's very harsh for me to say that कि यार बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली के जाएंगे. It would be an end of an era because ये दोनों एक pivotal role play करते हैं
for India in the white ball format, especially Virat Kohli. अगर आप देखो तो the way he has performed in T20 World Cup 2014, 2016, 2022, he was the highest run scorer for India in all three of them, and he deserves one T20 World Cup also. If you ask me, because he has given his heart out in the for this format. So as you said, it would be up to them what they are thinking. But if they want to play hands down, कुछ भी करो, किसी को भी आपको खिलाना ना पड़े चलेगा. बट दिस टू अगर वो लोग चाहते कि खेले तो आई वुड बी वॉकिंग, बिकॉज कोई भी आके ये नहीं बोला है कि यार मेरे को आप निकाल नहीं सकते. ना Hmm. शुभमन गिल, ना ऋतुराज गायकवाड़, ना यशस्वी जायसवाल, ना ईशान किशन, ना केएल राहुल भी. कोई भी आके ये नहीं बोल रहा है कि यार मैं रोहित शर्मा से बेटर हूँ. मैं रोहित Yeah. शर्मा से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हूँ अभी T20 में, तो मुझे चांस देना चाहिए. सेम गोस विद विराट कोहली. कोई भी Yeah. आगे आके ये जो आपको इतना टाइम मिल रहा है, आपको इतने सारे गेम्स मिले. राहुल त्रिपाठी का एक नाम आता है कि उनको इतने सारे गेम्स मिले, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए. अभी आज भी अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही बंदे ने T20 को कैपिटलाइज किया है, वो है सूर्य कुमार यादव. द वे ही हैज कैपिटलाइज दिस, the opportunity he has got, and now we know that he is the main man for us in T20. So वही है, the experience they bring, it's enormous, man. And वर्ल्ड कप आपको भूलना नहीं कि वेस्ट इंडीज में हो रहा है. वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में आपको स्लोइश पिचेस बहुत मिलेंगी. थोड़ी आपको ऐसा लगेगा रुक के टर्न होने वाली पिचेस, तो आपको लो 140 160 चेस करने को मिलेगा. एंड उसी टाइम पे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू चेज दिस टाइप ऑफ टोटल्स, जो आराम से उनको पता है कैसे चेस करना है, एंकर करना है इनिंग्स को. तो या, तो इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है आप पे. द कॉज ऑफ कंसर्न इंडिया हैज राइट नाउ इज हार्दिक पांड्या's इंजरी. एंड ये रूमर्स है कि हार्दिक पांड्या विल कम बैक in the IPL and directly he will captain in the T20 World Cup. So do you think that captaincy का एक थोड़ा बहुत issue हो गया, because he's our T20 captain right now, because रोहित शर्मा नहीं खेल रहे एंड अभी सूर्य कुमार यादव है. तो अब क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन सिलेक्टेड रखना वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ इशू फॉर इंडिया, बिकॉज वो खेलने तो वाले हैं नहीं एक भी T20. अगर खेलेंगे तो सीधा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. एंड जितना उनका इंजरी हिस्ट्री रहा है, would it be wise to give him the captaincy, or you think that Surya Kumar Yadav should be trusted? I don't know. I think it's still too early. I think if he captains in the IPL, अगर IPL में जो भी 14 गेम्स या जितने भी गेम्स है फॉर गुजरात, I think if he captains well, you never know, अगर वो एक और टाइटल जिता देते हैं गुजरात को, then everyone would be like, हाँ, Hardik is the right captain for India. I mean, वो टाइम पे I think right now more than Hardik the captain, we need Hardik the all rounder in the team. क्योंकि captaincy at that Yeah. point, I think in this team right now, no one would be surprised कि अगर हम captaincy या रोहित को दे दें या हार्दिक के पास ही रखे. I think everyone would be more than happy given the fact that Rohit has led the team very well in the 50 over format. So, but other than that, I think मेरे हिसाब से I just want him to play these games. I mean, your point is also really really good क्योंकि इंडिया के लिए T20 क्रिकेट खेलना and franchise cricket खेलना, there are two different things. Right now he is pretty unfit, it is fair to say, but yeah, I think after a point, I think this is going to be a cause of concern because ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है. द वर्कलोड मैनेजमेंट की हम इतनी बात करते हैं विद हार्दिक पांड्या. आई थिंक ही इज प्रोबब्ली टॉप ऑफ द लिस्ट in the players who start getting injured again and again. So overall, I think as long Yeah. as he's fit for the World Cup, I think I'm more than happy. Yeah, the fans are also enraged for the fact that he's always been fit for the IPL. अगर आप देखो तो IPL के 14 मैचेस खेलेंगे और इसमें बिल्कुल फिट रहते हैं. बट when he turns up for India, when he turns up for national duty, something comes to him, he gets injured again, and then it's a Maybe it's lengthy bad luck injury. as It's not well. like he, Yeah. yeah, it's bad luck, but it's not just 2 weeks, 3 weeks. It's a lengthy injuries, 4 months, 5 month injury. एंड डिफरेंस भी यही है कि कैप्टन होकर आपको एक टीम बनानी पड़ती है एक वर्ल्ड कप के लिए. अभी वर्ल्ड कप के लिए अभी आपको टीम बनानी पड़ेगी, और अगर आपका कैप्टन ही नहीं है वो टीम में, तो आप टीम बनाओगे कैसे? तो इस पर भी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है. बट या, दैट्स ऑल अबाउट द, बोलते हैं ना इंडिया का आज का गेम है, थोड़ा उसके बारे में. लेट्स टॉक But अबाउट आईपीएल एंड द also ट्रेड we विंडो have विच to इज talk गोइंग about ऑन. Harsha, we have to talk about Surya Kumar Yadav's innings and the anger which या people या have right ओके. now, especially या given the fact that people are like, कहाँ था ये वाला सूर्य 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, अभी मार के क्या फायदा, all of या that. Listen, all of that is completely fine and I completely understand why people are angry, but you also have to understand that this is the guy we will be relying in the next World Cup again. This is his format. It is fair to say that this is Surya Kumar Yadav's format. There's a reason he's the number one batter in that in the T20 format. And yes, वो time पे you can say कि यार जहाँ चाहिए था वहां नहीं बनाया ये वो everything all of that, but you cannot take away from the innings he played today once again.
And yeah, I mean, it was really sad in the World Cup as well. But let's not forget, most of the batters struggled on that pitch as well. It's not just about Suryakumar Yadav not being able to finish the innings. I think Jadeja struggled with the reverse swing; he got out as well. KL Rahul, I think वो बहुत ही अंदर एक shell में चले गए after one point, and then he couldn't convert his 60 odd of 110, 107 balls, whatever. So I think थोड़ा reactionary भी लग रहा है on social media like Twitter, for example. But what is your opinion? आई थिंक सो मैं गुस्से से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि काश Kash, yeah. काश ये सूर्य कुमार यादव उस दिन चल जाता। मतलब मुझे गुस्सा नहीं है सूर्य कुमार यादव से, बिकॉज आई नो दैट द क्वालिटी ही पोजेसेस, मतलब आज दिख गई है कैसी क्वालिटी, बट ऐसा अंदर से आ रहा है कि काश उस दिन चल जाता है यार। मतलब ऐसा ही होता है ना, आपको दर्द होता है, बट वी मूव ऑन, इंडियन फैन शुड मूव ऑन, एंड दे शुडंट क्रिटिसाइज और बी हैव एन एंगर टूवर्ड्स सूर्य कुमार यादव, Yeah, बिकॉज it's not just उस दिन him. सिर्फ उसके कारण नहीं हारे हो आप। Yeah. उस दिन सिर्फ उसके कारण नहीं हारे हो, योर होल बैटिंग डिपार्टमेंट फ्लॉप्ड, योर बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो फ्लॉप्ड आफ्टर टेकिंग दोज 3 विकेट्स। तो एक कलेक्टिवली हमारा बैड परफॉर्मेंस था उस दिन, इसलिए हम लोग हारे वो फाइनल। डोंट Yeah. ब्लेम जस्ट वन प्लेयर, ब्लेम होल टीम इफ यू वांट टू। तो मैं तो Correct. इसलिए कि मेरा ब्लेम तो पूरे टीम पे है कि उस दिन हम लोग फाइनल में टर्न अप ही नहीं हुए थे, हम लोग फाइनल खेलने ही नहीं आए थे, ऐसा लग रहा था। बट Correct. या लेट्स गेट पास्ट इट, बिकॉज बहुत ही ज्यादा। ओ या मोहम्मद कैफ वन, दैट्स इट्स अ जूसी वन। हर्षल, this is right now the hot topic of the day. हम क्रिकेट विकेट की तो हम बात करते रहते हैं. I mean, pretty much everywhere you're just seeing this being addressed across the world, not just by Indian fans. And to be honest, मैं तेरा इस पे एक honest opinion जानना चाहता हूं, and then I'll let you know my opinion as well. So Mohammad Kaif, after the World Cup, he said something about, the best team on paper was Team India, and the best team in the tournament was Team India, everything around that sort. And maybe India were the better side the entire World Cup. What First of all, what is your opinion on that first comment, and then we'll talk about this. Yeah, see, if you ask me, that tweet also sounded very salty. Yeah. Like he बोलते ना, it was not from an ex-cricketer, it was from a Indian cricket fan. And as a fan, he wrote that tweet that India was the best team on paper. It's just that we didn't turn up that day. But he has to know that he's not just fan; he's also an ex-cricketer. So he should know that there is a difference between team being good on paper and team being good on the pitch. And my problem is this tweet. Why would you justify this? There is no need to justify your comments if you have nothing wrong with it. मतलब यहाँ पे अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो इतना सारा चीज, तो आपको भी पता है कि आपने जो लिखा है वो थोड़ा बहुत कहीं गलत है। So Yeah. it was a very ridiculous tweet from Mohammad Kaif. I don't think he should have made that type of comments or tweet. But yeah, Yeah. it's his Twitter, it's his mouth. He can say whatever he wants. I think I completely agree कि जो तू point बोल रहा है ना, I think it's coming more out of maybe like frustration and more than fan को opinion आ रहा है rather than an expert opinion. But I do not agree with this. To be very honest, I think the first comment as well. Cricket is not played on paper. Cricket is played on the field, and big games, big teams, they need to know how to step up. And you can say yes, we played really well in the 10 games before leading up to the final. There's no denying that, and no one will deny that ever. But we still did not win the trophy, and we did not become the champion side or the best side in the tournament. So Australia, meanwhile, they lost 2 games in the start of the World Cup. They won 9 on the trot as well. So it's not like just India won 10 continuous game. Australia won 9 on the trot as well. So I think So they have also defeated every single team in this World Cup. They lost to South Africa and India, and they defeated both of them to win the trophy. So it was a very commendable job by Australia, and that's why for me this Australian World Cup was one of the best World Cup Australia has won out of those 5. And मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन फैंस जो है वहां पे उनके घर पे उनको इतना अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन अ वर्ल्ड कप वेर दे आर अंडरडॉग्स and winning in India the way they did. But yeah, it was a exactly. very good campaign for Aussies, man. Exactly, that's the point. क्योंकि होम वर्ल्ड कप में आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट यू आर द बेस्ट साइड इन द टूर्नामेंट. आई थिंक it is a given fact कि 2011 में we were supposed to be, because a lot of ex players who were a part of the 2011 side, उन्होंने आके ये बोला था कि यार जहां पे भी हम जा रहे थे, मीडिया, एयरपोर्ट, एवरीवन वाज सेइंग घर का वर्ल्ड कप है, जीतना ही है. दैट प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. मे बी इतना प्रेशर आप जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलोगे 27 में इन साउथ अफ्रीका, मे बी यू वुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ प्रेशर कि आपको तो वर्ल्ड कप जीतना ही है. Given that it was a home World Cup, of course you have that pressure. The players will be feeling that pressure. Australia felt it in 2015. They won it.
England felt it in 2019. They won it. It's not like that it's a neutral tournament. It's a neutral venue. Literally the entire country, the entire stadium is filled with Indian fans. So I think that is why I think it's a big achievement for Australia, because to be honest, leading up to the final, we were clear favorites. Uh, Yeah, and the way we played semi-final, when Pat Cummins chose to bowl for first, my first thought was how stupid it is to field first against a side who has just scored 390 runs in the semi-final. But his call was courageous, and only big hearts take courageous decisions, and his decision paid off, and they won the World Cup. But yeah, let's talk about something else, because talking about World Cup makes me sad right now, ऑस्ट्रेलिया because मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, आई थिंक कहीं तो मैंने एक पॉडकास्ट में yeah अभी रिसेंटली कल या परसों सुना था. सो दे मेंशन, बिकॉज आई वॉच अ लॉट ऑफ फुटबॉल एज वेल, एंड दे मेंशन ऑस्ट्रेलिया आर द रियल मैड्रिड ऑफ cricket, to be very honest. And true I completely hands agree to down. that point, because you I cannot blame won't that I won't side. say Real Madrid. I won't say Real Madrid. I won't say Brazil of football, because the way Yeah, Brazil have that World Cup heritage in them. yeah, but they Same. haven't won it for a long time, so maybe that's why. I Yeah, think, yeah, yeah. That's also true. That's also yeah, true. I think from Yeah. that point of view, I If you compare completely by agree. country, yeah. Yeah, If you I think I compare by completely country, agree to it's that point. Brazil. Yeah. True, I completely agree to that point. And yeah, I mean, थोड़ा टाइम लगेगा to get over Amazing. this World Cup loss, to be very honest, and we will get past it. The fans will get past it. Right now, I think the only one thing which I have seen amongst Indian fans, especially on Twitter and everywhere as well, कि इतना गुस्सा टीम की तरफ दिखाया नहीं जितना हम पहले वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद हमने जो दिखाया पूरे टीम्स के बाद, टीम्स के पीछे कि यार why did we play like this, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया. In this World Cup, it is more of like we are proud of how you played in the World Cup, and I think that is how it should be. अगर हम फाइनल जीतते रहे तो भी I would have liked the same reaction as well, maybe even better, क्योंकि of course we won the World Cup. So Yeah. but unfortunately that was not the case. Yeah, See, राहुल का यहाँ पे एक comment the है issue हर्षल. was, yeah, yeah. Let's take Rahul's comment and then we will talk about. Yeah, so he's saying guys एक वीक हुआ नहीं है वर्ल्ड कप के लिए एंड बायलैटरल सीरीज रखना. That's why injury increase in the Indian team for workload management. Yeah, I mean, but also it's the international calendar is built way long before ICC events and stuff like this. And let's not forget that pretty much both the sides are rested. I think 1, 2, 3 players max are playing from the World All the Cup. And bowlers are rested from both the sides. yeah, so I think it's a completely new team. I think given the fact that कि सारे नए players हैं, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जायसवाल, गायकवाड, Ishan Kishan played just one game in the World Cup, if I'm not wrong. Surya is the only player, I think, the senior player from the side. So I think this is a different topic compared कि यार अगर same Indian team खेल रही होती, yes, then I think I would have raised the same question, but not with this team. And as I said that 7 months ही है आपके पास सिर्फ नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो you have to start preparing also, and you cannot just pave away this 5 मैच सीरीज की. यार क्यों खिला रहे हो ऐसे? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे ये वाली सीरीज में. आज बड़ा आंसर आपको ये मिला है कि रिंकू सिंह इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड इज अ वर्ल्ड क्लास फिनिशर. वही राहुल बाग का जो कमेंट है वापस सामने लाते हैं कि he's a different talent. From that 5 6s, he still have that form. Of course he has, man. The He way looks रिंकू he सिंह वो looks a different कामनेस player. जो दाता है, जो कामनेस है उसके अंदर, यार उसको पता है यार मैं कर लेगा ये. Yeah, ऐसी कामनेस मैंने धोनी में देखी थी. अगर लास्ट टाइम मैं किसी फिनिशर की बात कर रहा हूँ, तो धोनी में वो कामनेस दिखती थी यार, अरे इतने रन से कर लूंगा मैं. सेम true, गोज विथ रिंक, इतने रन से अरे आराम से. आई नेवर फेल्ट फॉर अ सेकंड दैट कि यार जब तक रिंकू सिंह है तब तक हम लोग ये चीज हार ही नहीं सकते. So true. he's giving me that type of security, and that type of security from a finisher. It's gold for any team. Any team. हम लोग crave कर रहे थे ऐसे finishers का for the last 4 years. जब से एम एस धोनी ने रिटायरमेंट लिया हमें कोई फिनिशर ही नहीं मिला है. एक भी फिनिशर ऐसा याद नहीं आता कि जो आके गेम अपने मर्जी से फिनिश करता था. एंड रिंकू सिंह इज डूइंग दैट. होप सो कि हमारी नजर ना लगे उस पे उसको यार, तो नींबू मिर्ची लगा देना सब लोग, उसको नजर नहीं लगनी चाहिए हमारी. And I hope that he shines the way, because he's a gem of a player and he's a gem of a person also. Yeah, I think really very well said, Harshal, to be honest. And वही यार, I think he looks really ready for representing India. जब भी वो जर्सी में देखते हैं रिंकू सिंह को, Uh, तो I just hope that this IPL as well is really good for रिंकू सिंह. And I just hope that जितने भी मैचेस अभी बचे हैं, रिंकू सिंह is a part of
of the squad, and he is playing in the 11, because that finisher wala role alongside Suryakumar Yadav, I think that could be a big game changer for Team India when these two guys bat together. So yeah, I think, but that's Yeah, for another day जो discussion होगा. Yeah, we have had some IPL news as well along the way. Harshal, अगर तू बताना चाहे audience को, because yeah. everyone's asking Let's here. start with a rumor which is going around that Andre Russell might be released by KKR. This is so huge news. I'm giving you one of the incident, one of the stories about Andre Russell. He was banned for 1 year from the international cricket for doing some, I don't know why was banned. Kolkata Knight Riders was the only team who retained him from every franchise. जो भी वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज है, सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसको रिटेन किया था. वो साल वो खेल नहीं पाया था, but still they retained him because they know he's the Andre Russell. And now the rumors are coming that the Andre Russell को शायद से KKR रिलीज कर देगी. तो it would be an end of an era for a IPL great. I would call Russell an IPL great because the way he used to play. And as an RCB fan, I know the torment he has given us, man. वो बेंगलुरु का इनिंग्स याद आता है उसका, जब 50 रन चाहिए थे 12 balls में, and he went berserk to Mohammad Siraj and Tim Saudi. So yeah, if they are releasing Andre Russell, that means that they want that money. अगर आपको पता हो कि लास्ट दो ऑक्शन से केकेआर का एक ही प्रॉब्लम रहा है कि उनके पास ऑक्शन में जाने के टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते. दे डोंट हैव दैट मनी टू बाय न्यू प्लेयर्स. जो अभी नए प्लेयर्स आ रहे, तो रसेल का रिलीज शायद से वो एक रहेगा. एक और चीज है कि द किंग ऑफ केकेआर is back. GG is back there, and I think that this might रसेल का जो न्यूज आ रहा है वो भी एक और रूमर बहुत आ रहा था जिसको भी नकार दिया गया है, वो है वेंकी अय्यर और यशस्वी जायसवाल का स्वैप. एंड जब मैं ये सुना, आई वाज लाइक इन नो वे राजस्थान रॉयल्स आर गिविंग यशस्वी जायसवाल टू एनी अदर टीम, लेट अलोन बीइंग अ ट्रेड. तो दैट वाज अ फॉल्स, बट सब रूमर्स पे भी ध्यान मत देना, थोड़ा ऑफिशियल्स आने देना. बट या, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट Russell may get released from Kolkata Knight Riders, and And GG I'm not might have surprised. that some say in it. I am not surprised one bit. I think it has been long time coming. I think Andre Russell ko, I think KKR needs to move on with the likes of Andre Russell and Sunil Narine. They are no longer the same player. There is a reason that these guys are playing, franchise cricket all over the world, because they know unka end aa gaya hai for T20 cricket. And given the fact that you'll have extra 5 crores in your purse, plus when you release these guys, big money guys, you can literally form an entire new team with that money left. So, and there are going to be some good Yeah, players in this auction this time around. I think 590 ke aspas players will go under the hammer, and the very yeah, soon we will be getting the release players list as well for most of the teams. So we will be talking about that on different streams, and uske baad to properly, I think that is the time when the chat as well, everyone who joins us the stream, they are pretty active as well, कि इसको जाने नहीं देना चाहिए था, इसको रखना चाहिए था, and everything. Everyone just like the video, subscribe to the channel, whatever, all the good stuff, and do join us around that streams as well. But other than that, उसके वो time जब आएगा तब हम definitely IPL की बात करेंगे. Lokesh is also saying yeah. 1 month real away से new वैसे देखा for जाए तो. KKR for this decade, new young talents in the auction like Rachin Ravindra. And देख, एक चीज ना ये होता है कि यार, say for example, एक जैसे वर्ल्ड कप हो गया, yes, Rachin Ravindra and Travis Head are, they did really well, but you also have to see that there is a very high chance that these guys may not get sold as well. Rachin Ravindra, yes, he has been doing really well. Travis said, yes, he has been doing really well, but these are overseas players. You cannot expect, more than 8 players in your side. So you have to be very sure कि ये player हमें चाहिए ही चाहिए. For example, I would see a Gerald Coetzee, being higher up the order than say a Travis said right now. I don't know. I just feel it. Ki, for me, yes, I would See, I would there is go the for reason, na. sorry. You can get an Indian talent to rectify what Travis Head gives you, but you Yeah, cannot find an Indian talent what Gerald Coetzee will give you. An express pace, 150 plus bowling, and then little bit of batting down the order. So that's what Gerald Coetzee brings to your party, and that's why for me also Gerald Coetzee would be the number one pick for any team. I'm not saying I'm not pickpocketing any one team, but if you ask me, one team will go for him very hard, and we all know that they have sure. just announced that Ben Stokes will not be part of their squad. So they have freed up the 16 crore that which
that they paid for Ben Stokes, and I'm damn sure they will go after Gerald Coetzee Yeah, he's because going he to be a also big plays signing. for Joburg Super Kings. Right. Exactly. I think यही मेरा भी वो reason था कि because he already knows the franchise and the franchise is going to tell him that we are going to go all out for you. If there is something Yeah, happening, you yeah. should remember that we are going, you are a first pick, and अगर नहीं मिलता है, then that's a different thing because you may not have the money or anything. But yeah, I think that's for 19th of December. Yeah, one more. Uh, One more news about Gerald Kodza was that after the injury to two of the players from KKR and CSK, I don't know yes. which player got injured for CSK. They asked for Gerald Kodze that will you come as a replacement, and Gerald Kodze knew that if he went as a replacement, he will get only 20 lakh rupees, and if he gets retained, he will only get 20 lakh rupees. And he knew for a fact that if he goes into auction, he will be much more worth than the 20 lakh rupees he was offered. एंड राइट नाउ आई एम टेलिंग यू 10 करोड़ के ऊपर जाएगा जराल कोटजे लिख लो आपको जहां लिखना है वहां पे एंड दूसरा प्लेयर जो बहुत ज्यादा बिकेगा एंड फॉर मी इट्स रचिन रविंद्र एंड फॉर द फैक्ट दैट वो यंग है एंड इज एन ऑलराउंडर आपको भले इंडिया में वैसे मिल जाएगा लेकिन जो क्वालिटी वो पोजेस करता है एक फॉरेन प्लेयर में आपको वैसी क्वालिटी चाहिए रहती है एंड यू ऑल नो दैट यू कैन बिल्ड ऑन हिम आपके पास बहुत लंबा अगर आपको एक बिल्ड करना है ऐसा जैसी टीम हो गई है जिनको पंजाब जैसी टीम है जिसको बिल्ड करना है एक बड़ी बोलते हैं फ्यूचर के लिए टीम तो रचिन रविंद्र माइट बी द परफेक्ट पिक फॉर देम आल्सो Yeah, and once जो जैसे जब वो लिस्ट आ जाएगी, the players who will go down under the hammer, I think तभी काफी कुछ क्लियर भी होगा. I mean, right now it's just ifs and अभी तक buts. तो You never know because you do अभी not तक have तो the रिलीज retail. लिस्ट भी नहीं आई है ना Yeah, exactly. You रिलीज don't लिस्ट have भी the नहीं आई है अभी तक retail या list, the release list, whatever. हमें पता नहीं कौन सा player कहाँ गया है. But only know कि यार थोड़े trades हुए हैं, like Devdutt Padikkal for Avesh Khan. I think that's a I think that's a win-win trade for. लेट्स टॉक अबाउट दैट Yeah, I think that's a decent trade for Rajasthan Royals in my opinion. I think the yes, they have been backing Navdeep Saini and Prasidh Krishna, but I don't know. I think Avish Khan would offer more than these two pacers, and won't be surprised if Navdeep आई Saini थिंक is released in the squad as well. Yeah, for me, getting Avesh Khan is a pure steal for Rajasthan Mm. Royals because they have always missed that one Indian fast bowler. If you see their lineup for the last year also, they have always missed that one Indian bowler. जैसे आपने बोला वो कुलदीप को खिलाते थे एक कुलदीप सेन करके थे उनको खिलाते थे नवदीप सैनी को खिलाते थे बट नो वन वर्क they have all the pieces together right now. They just needed one piece, and LSG just gave them that one piece, and it was Avesh Khan. But my thought is about DDP. He went to LSG where they already have two openers, and the place where he excels a lot is a open as a opener because he's an opener. अगर आप देखा जाए तो आपने कर्नाटका के लिए भी वो किया है आरसीबी के लिए भी अगर उन्होंने अच्छा किया तो ऐसे ओपन करते हुए अच्छा किया है तो आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई द फैक्ट DDP agreed to go to LSG. He might play at number 3 because number 3 पे LSG में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जो हैंड अप करके बोले कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा बट या आई वुड हैव I थॉट think दैट कि ही वुड हैव गॉन टू ऑक्शन अगेन I think my reason for DDP agreeing to this is the ground, especially where Lucknow plays in. I think Ekana ka jo stadium hai, it's pretty slow, it's pretty low. You need anchors to hang in there on that pitch because maybe that's the reason Lucknow struggled a bit last season. But या DDP या at number 3 playing at Savai Mansingh is really is a different player than he plays at Ekana. Here at Lucknow Stadium, a 40 ball 55-60 could be a gold mine. But in गोल्ड Rajasthan, you cannot say that the exact same thing. So I think maybe that is the reason they are looking at DDP from that point of view. And given the fact that Lucknow did buy a lot of foreign all rounders, I think वो release करेंगे just to have those extra funds and maybe buy maybe like a proper spinner or other Indian players as well. But yeah, I think it's all ifs and buts right now. जैसे वो list आएगी release list या retain list जो भी. हाँ, जैसे हम लोग को पता चलेगा कितना पर्स है पता Yeah. चले कितना खर्च करने के लिए पैसा है आपके पास तो जैसे राहुल बाग ने बोला जरड कोटजे पता नहीं पर मुझे फ्यूचर लेजेंड लग रहा है अगर आप देखो उनका बॉलिंग का स्टाइल He's उसका deadly. अग्रेशन थोड़ा आपको डेल स्टेन का रेजोनेशन दिखता है उनमें बट ही इज नॉट डेल स्टेन ऑफ कोर्स डेल स्टेन इज द ग्रेटेस्ट एवर टू बोल बट या ही हैज एक्सप्रेस पेस मैन अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा ही वाज बोलिंग 140 150 कंसिस्टेंटली एंड बैटिंग में भी इज नॉट अ टेल एंडर और वो मार सकता है बड़े बड़े हिट उसने साउथ अफ्रीका की लीग में ये बताया जेएसके के लिए बहुत बार कि ही कैन हिट दोस बिग सिक्सेस फॉर देम टू सो Also,
For एक me, he's होता है the ना. big price for every team. True. And also, I think one more thing is that when South Africa backs a fast bowler, you have to say that he is going to be a good fast bowler. I think I don't even Yeah. remember properly the last fast bowler जिसको South Africa ने back किया था और उसने अच्छा नहीं किया. I think the list, if you see the recent list, Marco Jansen, Rabada, Ngidi, Norkie, all these guys, they have performed when they have been given the chance. So I think Gerald Coetzee is pretty much from that list as well. So yeah, I think one I will be for sure on Gerald Coetzee for most of the teams. But let's not forget IPL auction is a big event, and uh, 590 And players build going up to चालू हो गया है. yeah, I think there will be a lot of trades happening moving forward as well. I think Quinton de Kock का कुछ rumors पढ़ रहा था मैं. I don't know how true is that because DDP, if he is coming in, would you open with him or would you release Quinton de Kock, or scale Rahul is not going anywhere. So I think maybe He's the captain. exactly. So I think overall, I think this should be a fun IPL auction to watch out for, and maybe ऐसा auction जो शायद सारी teams को एकदम balanced out कर दे in terms of batting and bowling. So I think मजा आएगा काफी 19th of December, but yeah, I think that's for later. Before that, we still have 4 more games to go for Team India against Australia. Then we are going to South Africa, if I'm not wrong. I think 17 December को हम T20 series, ODI series या कुछ तो खेलने वाले हैं in South Africa. Pink color की T20 है. photo खींची थी मैंने. So I think that is the time when we'll have our big guns back as well. So I think looking forward to that as well. But other than that, we have pretty much covered most of the things जो आजकल चल रहा है cricket world में. कुछ अगर छूट गया तो do let us know in the comment section. Like the video, subscribe to the channel who's watching it later on, and become a part of the family as usual. Like we say, Harshal, thank you so much. I'll see you guys in the next stream. Good night. Good night.